Hello guys, I'm Poonam Badgujar, senior faculty in Vidya Mandir classes, HAL Center. Now this is our third lecture for the acid, bases and salts, where we are going to discuss the dilute and concentrated solution, pH scale, and the bases and their presence. That means ki where are the bases are present in your daily life, right? Now this is the, what do you mean by a dilute and concentrated solution? If you see the picture is very clear to you. Just let us assume the red dots are water and the blue dots are acid. That means in dilute solution the acid quantity is less whereas the water is more. If I talk about the concentrated solution, the acid quantity is more and the water content is less. Right, a concentrated solution in which a large amount of solute is present is dissolved in less amount of water. Means solute is in the large amount and the water is solvent is in the less amount is the concentrated solution, and the dilute solution where the solute is very less but solute is very less and the solvent is very large in quantity. I already told you the water in the first case is large and the acid is less, but in case of the concentrated solution the water is less but the acid is more. Right, I have shown the example and the picture of the dilute hydrochloric acid, which is the bottle is there in the laboratory also. Then next topic is the pH scale. pH scale is the scale, basically the name itself suggests that the pH scale, that means it is a scale. What this scale is doing, it is just measuring the acidity and the basicity of a substance. Means how much a substance is acidic, how much a substance is basic. Means it is a strong acid or a weak acid or a strong base or a weak base, right? सो उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक स्केल आती है कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है, कौन वीक है, कौन ज्यादा स्ट्रांग बेस है, कौन वीक बेस है, राइट उस स्केल को कहा जाता है पीएच स्केल और पीएच वैल्यू. ये आपकी 1 से 14 तक की रेंज में होती है, वेयर आई कैन से कि 1 इज स्ट्रांगली एसिडिक एंड 14 इज स्ट्रांगली बेसिक. जैसे जैसे आप 7 की तरफ बढ़ते जाओगे, 1 से 7 की तरफ वीकनेस एसिडिक नेचर डिक्रीज होता है, और 7 से अगर आप 1 की तरफ बढ़ते जाओगे तो एसिडिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा. 7 से आप 14 की तरफ जाओगे तो बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज होगा. दैट मींस पीएच यहाँ पे बढ़ता जा रहा है 7 के बाद, तो वो चीज सॉल्यूशन में बेसिसिटी ज्यादा है उस सॉल्यूशन की, राइट. इफ आई टॉक अबाउट द एसिडिक में, तो आप देख रहे होंगे बेटा एसिडिक में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा है. जैसे जैसे मैं 14 की तरफ बढ़ रही हूँ तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है, राइट. और this is the pH scale I have shown in the picture also. And what is 7? 7 is neutral, जिसका pH neutral है, जहां पे H positive and OH negative आयन की concentration same है. मीन्स जितने H positive है उतने ही OH negative है, दोनों मिलके एक दूसरे को neutralize कर ले हैं from the neutralization reaction, that is pH 7 is neutral. Now I have shown a bigger pH scale over here where you can see the few examples regarding the pH scale. If I talk about the pH 1, pH 1 is the, if we eat too much, right, so what will happen, acidity हो जाती है. acidity is basically the स्टमक अपसेट हो जाता है, जिसमें कि तुम्हारा स्टमक में एसिड बहुत ज्यादा रिलीज हो जाता है. तो यहाँ पे पीएच इसका कितना है, 1 है. अगर मैं पीएच 2 की बात करूं तो यहाँ पे बैटरी एसिड, बैटरी में जो एसिड डलता है उसका पीएच कितना होता है, 2 होता है. नॉर्मल स्टमक का पीएच नॉर्मली 2 होता है. दिस इज जस्ट एन अप्रॉक्स वैल्यू, राइट. सोडा की बात करते हैं. सोडास, विनेगर एंड लेमन हैज अ पीएच ऑफ 3. दे आर वीक एसिड्स. Orange juices and acidic soil has a pH of 4. Tomato, banana, coffee have a pH of 5. And bread, salmon, potatoes, normal rain has a pH of 6, right? Now this is the whole chart. If you read, you will find the things which is there
having the certain pH ranges, right? अगर मैं बेकिंग सोडा की बात करती हूँ तो बेकिंग सोडा हैज अ pH of 9. अगर आंट स्टिंग करती है then you will rub the baking soda over it. It is a weak base, right? Baking soda is a weak base. आंट एसिड वीक एसिड है तो वो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं ये यूज करती हूँ, right? And sodium hydroxide is a strong base which has a pH value of 14. Now, acids are never stored in the metallic container. Why? Because acids are very reactive and they will produce the H positive ions. And what will happen? They are corrosive in nature. That's why they are stored in the glass container. I have shown this picture where this hydrochloric acid is there in a glass bottle, not in a steel or any other container, right? So acids are always be contained in glass container. They are rather stored in the glass container. This is because they are generally reactive in nature. If we keep them in a metal container, that may react with the metal and erode them. Erode them means corrosive in nature. उसे वो rusting कर देगा उस metal की. And the glass on the other hand does not react with the acid at all, right? This is the table where the bases are present in our daily life, where we can see the bases. Sodium hydroxide is there in the soap, detergent and caustic soda. Potassium hydroxide is there in the caustic potash. And sodium carbonate is there in the washing soda. जो कपड़े धोने के साबुन होते हैं, कपड़े धोने का जो डिटर्जेंट्स होते हैं उसमें सोडियम कार्बोनेट is present. Calcium hydroxide is a whitewash which is used for घर में हम लोग दिवाली के टाइम पे वो पुताई करते थे पुराने जमाने में. दैट इज द व्हाइट वॉश, राइट? तो ये सारा टेबल है आपके बेसिस का, जो मैं डेली लाइफ में बेसिस अपने यूज भी कर रही हूँ, तो ये आपको पता होने चाहिए, राइट? थैंक यू गाइज, दिस वीडियो